में कैसे सॉल्व करोगे उसको, उसके बारे में मेरा डिस्कशन है. And today is the last day of submission of assignment, programming assignment 1 and 2. So everyone to complete before 11 p.m. because 11:59 is the last. After that you cannot submit your question, and this is required because uh, in fourth year you are giving some placement exam, and this type of uh, platform is used to solve your placement problem. So better to practice uh, online platform, राइट. तो जब फोर्थ ईयर में जाओगे तो इसी तरह के प्लेटफॉर्म पे तुम एग्जाम दोगे, जिसमें क्या होता है, इन दिस प्लेटफॉर्म द हाफ कोड इज रिटन, द रेस्ट कोड you are going to write, right? So this time of situation, so I am sharing my screen and showing how to solve the online uh, uh, problem statement in online compiler, right? Everyone note it down and try to complete. First you have to log into your NPTEL through your Gmail account. Whenever log in to the Gmail account, there are first some info announcement. Just click on announcement. You can see the latest announcement. जो भी announcement होगा, everything just display in this announcement section. And after that you have to do what? First go for the week 0. There is practice assignment, and that is I think related to what, your C language से related होगा, एकदम simple होगा, for practice purpose only, right? Simply open and just choose it. ये just practice के लिए, you can try many time, right? And same type of question coming in your main exam, जो certification exam होगा उधर भी same type का आएगा, right? और वहाँ पे तुम करोगे. After that there is lecture series. यहाँ पे बहुत सारा lecture series है in free time, and lecture series is maximum 10 to 20 minutes each lecture. तुम वीडियो देख सकते हो, because I have chosen this subject. Why? Because this subject currently you are reading in the semester. अभी तुम जावा सेमेस्टर में पढ़ रहे हो, और डीएसए भी तुम अभी सेमेस्टर में डीएस पढ़ रहे हो, डीएसए यूजिंग जावा. तो दोनों कोर्स मैंने रिकमेंड किया था कि एवरीवन शुड गो फॉर बोथ द कोर्सेज, क्योंकि डीएस वहाँ पे 50 से 60% डीएस का क्वेश्चन होगा, एंड 40% क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम जावा अगेन इन डीएसए यूजिंग जावा. तो इसलिए दोनों कोर्स तुम एक साथ कंप्लीट कर सकते हो. द क्वेश्चन इज कमिंग हाउ टू सॉल्व, like there are two types of question. One question is what? Quiz question, that is already completed, right? In quiz question the solution is available, तुम solution देख सकते हो, right? See this question is a very simple question. The first question is what? The statement is given, right? What will be the output? तो यहाँ देखो जैसा इधर लिखा हुआ एग्जैक्ट आउटपुट मैच करोगे. एग्जैक्ट आउटपुट इज ए. सर आई थिंक स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुआ. Screen is not visible. Okay, I यस will set. Yes, screen is visible. यस सर. Okay. So first quiz question is what? I am just choosing again. Suppose this is assignment 1, week 1, already completed. Just click on this. This is what? Solution part. The first question is coming. What? The code snippet is given. ये एक जावा का कोड लिखा हुआ है, इसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, प्रिंट एलन. व्हाट विल बी द आउटपुट? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ अबव कोड? तो जैसे इधर लिखा हुआ है इन प्रिंट स्टेटमेंट, सेम थिंग शुड बी हियर. So this is a correct answer, right? Just choose it. Next question, and the description is also given.
This is standard syntax for Java program to print string hello world to the console. वो भी लिखा होता है सॉल्यूशन को जब देखोगे. फिर कह रहा अ जावा फाइल विथ एक्सटेंशन डॉट क्लास कंटेन्स व्हाट, मतलब जिस जावा फाइल के लास्ट में डॉट क्लास होता है वो फाइल कैसा होता है. इज इट सोर्स कोड? नो. सोर्स कोड कंटेन्स व्हाट? डॉट जावा. Is it bytecode? Yes, that is bytecode, means after compilation. So this kind of simple question is coming, right? इस तरह का क्वेश्चन होता है जो कि हम फर्स्ट 2-3 क्लास में जावा के क्लास में पढ़ चुके हैं, राइट? और तुम सॉल्व कर पाओगे इजी वे में. तो you have to solve 12 assignments and programming assignments. So today's theme is what? How to solve programming problems, right? Because this is required. ये सब तुम लोग थियोरी पढ़ोगे, उसका वीडियो देखोगे, हो जाएगा सॉल्व. डीएसए में भी सेम है, डीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो सब सॉल्व हो जाएगा. बट क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व दिस प्रोग्रामिंग असाइनमेंट. Whenever clicking this programming assignment, it opens, right? And I think in lab we already covered. देखो first question is coming. What? Write a Java program, right? Write a Java program to check if integer is even or odd. कह रहा है ये क्वेश्चन लिखना है तुमको और आंसर क्या आना चाहिए. देखो कैपिटल में ऑड आना चाहिए और कैपिटल ओ से शुरू होना चाहिए और इवन ऐसा आना चाहिए, राइट? अगर नंबर ऑड है तो ये आंसर आना चाहिए, अगर इवन है तो ये आंसर आना चाहिए. यहाँ पे कुछ नोट्स में लिखा होगा द कोड यू सी इज नॉट कंप्लीट, योर टास्क इज टू कंप्लीट द कोड एज पर द क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन में जैसा लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग तुमको इसको करना है, राइट? Same type of problem coming in was placement questions. Cognizant and so many MNC company use this concept. वो क्या करेगा? The uh, logic is defined in what? Story format, right? और उसके बाद आधा कोड लिखा होगा. You have to study story and understand the logic and write it in between the incomplete code, right? तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर योर प्लेसमेंट और प्लेसमेंट में तुमको बहुत हेल्प करेगा ये, राइट? तो ये है. और यहाँ पे लैंग्वेज क्या है, मतलब ये जो प्रॉब्लम है यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ जावा. अदर लैंग्वेज इज नॉट अलाउड, राइट? ओनली जावा. सेम थिंग in if you are using python, dsa using python, you have to solve the problem using python, right? dsa using java, solve using java, right? File name is already written, right? You cannot change, इसको change नहीं करोगे because the class name and file name should be same. देखो यहाँ लिखो ये public class है क्योंकि ये कोड को तुम modify नहीं कर सकते हो. Editing is disabled. नहीं तो सब लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे and paste it to the chat gpt and get the solution, right? That is not possible, right? इसको तुम कॉपी नहीं कर सकते, राइट? तो इसको भी नाम नहीं चेंज करोगे क्योंकि ये पब्लिक क्लास है. तो दिस एंड दिस शुड बी ऑलवेज सेम, हमेशा सेम होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट कंपाइल, राइट? नेक्स्ट थिंग इज व्हाट you main method is written and scanner class used for what? Taking user input. तो scanner एक declare किया गया and the object is what? In, right? So in dot next int used for what purpose? Take a one integer as an input. तो जो input होगा वो कौन से वेरिएबल में जाएगा? नंबर. अब तुमको कुछ भी कोड लिखना है इसी के साथ लिख पाओगे, इस नंबर के साथ. अदर वेरिएबल यू कांट यूज, राइट? दैट इज फिक्स्ड. क्लियर? हियर दिस इज व्हाट कमेंट. ये सब कमेंट है, इस कमेंट को तुम डिलीट कर सकते हो, राइट? नो इशू. बट इन कमेंट जस्ट रीड इट. ये एक डॉक्यूमेंटेशन है. तो इधर लिखा हुआ दिस इज सिंपल बिगिनर लेवल टास्क. योर गोल इज टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड. कंप्लीट. योर गोल इज चेक. तुम्हारा गोल भी इधर लिखा हुआ, क्या करना है? इवन और चेक करना.
कंप्लीट द कोड बिलो फिलिंग मिसिंग लॉजिक। लॉजिक मतलब तुम्हारा एल्गोरिदम पार्ट, जो एल्गोरिदम तुम डिसाइड करोगे कि कैसे सॉल्व करोगे, यू हैव टू डू। राइट, यहाँ पे कुछ हिंट भी दे रखा है, दैट इज ऑल्सो कमेंट। इस तरह का जो कमेंट होता है इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सिंगल लाइन कमेंट, कंपाइलर इग्नोर। और ये जो कमेंट होता है दैट इज व्हाट, मल्टी लाइन कमेंट। मतलब देखो ये जो पूरा 5 6 लाइन 8 लाइन लिखा हुआ है, ये इस यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको कंपाइलर इग्नोर करेगा। हिंट में क्या लिखा हो, अ नंबर इज इवन इफ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, मतलब जिसका रिमाइंडर 0 होगा। अ नंबर इज ऑड बाय डिवाइडिंग 2 एंड लीव रिमाइंडर 1। और बोल रहा है द मॉड्यूलो ऑपरेटर गिव द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन। तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम डिवाइडिंग 10 modulus 2 become 0, that means 10 is even. 7 modulus 2, it becomes 1. कह रहा use an if else statement to decide which case applies। तो यहाँ क्लियर लिख दिया, यहाँ लॉजिक भी लिख दिया कि ये लॉजिक है हमारा। और बोल रहा इफ एल्स लिखो, राइट। और बोल रहा आउटपुट प्रिंट करने के लिए क्या यूज करना है, प्रिंट। तो ये चीज करना, और क्या प्रिंट करना वो भी लिखा हुआ, इवन और ऑड। राइट, चलो नीचे। तो यहाँ देखो मैंने लॉजिक लिखा, एक लाइन में लिखा, लेकिन मैंने इस रूल को फॉलो नहीं किया। यहाँ पे लिखा हुआ यूज इफ एल्स स्टेट, मैंने इफ एल्स नहीं लिखा। आई कैन डायरेक्टली यूज व्हाट, कंडीशनल ऑपरेटर। और तो तुम इफ एल्स से करो। ओके, जस्ट गो हियर, राइट हियर व्हाट, इफ। और यहाँ पे क्या एंड यूज करेंगे, नो। एंड तो इधर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, इधर वेरिएबल किस में इनपुट आ रहा, इनपुट इज कमिंग ऑन दिस नंबर वेरिएबल। तो यूज ओनली नंबर वेरिएबल, डोंट यूज अदर वेरिएबल। तो राइट हियर व्हाट, नंबर एंड मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए, राइट। Suppose I am writing here even in small letter, right? फिर else what to write? System dot out dot print odd. Again I am writing odd in same small letter, right? ये मैंने लिख दिया, लेकिन इधर बोला था क्या लिखना, इवन का ई कैपिटल होना चाहिए, ऑड का ओ कैपिटल होना चाहिए, लेकिन मैंने उसको नहीं माना। आई कैन राइट माई सेल्फ, चूज राइट। यहाँ पे देखो टेस्ट केस, टेस्ट केस मीन्स व्हाट, इफ समवन गिविंग दिस फोर द आउटपुट शुड बी, कंपाइल करते हैं, राइट। देखो टेस्ट केस, इफ समवन गिविंग मतलब सिस्टम इज गिविंग फोर, देन आना चाहिए इवन ऐसा, लेकिन मेरा आउटपुट कैसा है, ऐसा। स्टेटस क्या आ गया, रॉन्ग आंसर, राइट। रॉन्ग क्यों रॉन्ग हुआ, कि आई हैव इग्नोर दैट रूल, मैंने इस रूल को इग्नोर किया। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कन्वर्ट ई कैपिटल एंड ओ कैपिटल, राइट। दिस इज कंपल्सरी, राइट। जब तुम कम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म में जब एग्जाम दोगे, उधर भी इधर रूल लिखा होता है, सेट ऑफ रूल्स, उसको पढ़ के तुमको कोडिंग करना है, राइट। तो उसी को बेटर बनाने के लिए हम लोगों ने ये कोर्स को चूज किया कि तुम सीख जाओ पहले से, राइट। और प्लेसमेंट में भी तुमको बहुत, नहीं तो आधा कोड तुम्हारा कंपाइल ही नहीं होगा, राइट। देन कंपाइल इट, जस्ट सी, सिस्टम का आउटपुट ऐसा था और मेरा भी आउटपुट ऐसा ही आया, राइट। ऐसे ही आ गया, राइट। और स्टेटस इधर क्या लिखा है, कुछ भी नहीं, दैट मीन्स माई प्रोग्राम इज सक्सेसफुली कंपाइल्ड, राइट। जस्ट क्लिक सबमिट। तो टेस्ट केस जब तुम प्लेसमेंट का एग्जाम दोगे, उधर एक टेस्ट केस नहीं होगा, 15 टेस्ट केसेस, 12 टेस्ट केसेस, 10 टेस्ट केसेस, मतलब अलग अलग हम इनपुट डाल के
आउटपुट पहले से फिक्स किए हुए वैसा ही तुम्हारे लॉजिक में आना चाहिए, राइट? जस्ट सबमिट। यस, योर आंसर इज सक्सेसफुली सबमिटेड, राइट? और ये तुम बार बार ट्राई कर सकते हो जब तक ये डेट है, मतलब डेट इज 6 मीन्स टुडे 11:59 तक तुम ट्राई कर सकते हो। चेक वेदर माई प्रोजेक्ट इज करेक्ट और नॉट। यस, पहले तो ऊपर एक मैसेज आया था सक्सेसफुली कंपाइल। अभी मेरा प्राइवेट टेस्ट केस, प्राइवेट टेस्ट केस किसको बोलते हैं? मतलब एक टेस्ट केस तो ऊपर दिख रहा था कि 4 इनपुट डालेंगे तो इवन आएगा, और कुछ टेस्ट केस भी अंदर भी लिख के रखता है सिस्टम कि उसमें क्या आंसर आता है। तो ये अभी मेरा अंदर वाला भी टेस्ट केस ट्रू हुआ और यहाँ आ गया पास। दैट मीन्स आई हैव सक्सेसफुली completed my submission. Same kind of thing is also available with your competitive platform like Lead Code, Hacker Rank. ये सब का भी कोड को अगर तुम उसको भी ट्राई करोगे, एकदम सेम पैटर्न होता है। द सिचुएशन इज गिवन, जस्ट गो थ्रू द सिचुएशन, रीड इट एंड सॉल्व इट, एंड दैट रैंक मैटर फॉर योर प्लेसमेंट। उसमें रैंक अगर अच्छा आता है तो तुम्हारा डायरेक्ट कॉल आ जाएगा। जो भी बिग कंपनी है, ऑल बिग कंपनी take exam using these. Next, programming 2. Just click it. Total 5 programming. Just read it the question. Write a Java program to print area and perimeter of rectangle. Right? फिर यहाँ लिखा हुआ the code you see is not complete. Your task is to complete the code as per question. Think of it like programming puzzle. इग्नोर प्रेजेंटेशन एरर। अब ये प्रेजेंटेशन एरर क्या होता है? व्हाट इज प्रेजेंटेशन एरर? अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ करके, राइट? तो प्रेजेंटेशन एरर मीन्स व्हाट, वो मैं अभी करके दिखाऊंगा कैसे होता है प्रेजेंटेशन एरर। तो क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर, द फॉर्मूला इज गिवन, राइट? फॉर्मूला इज व्हाट, क्या फॉर्मूला होता है बताओ एरिया का? If I'm taking area equal to, formula is what, breadth into what, height, and perimeter equal to 2 into under bracket breadth plus height, right? This is the formula, right? अब ये दो फॉर्मूला को करना है तो हाउ मेनी वेरिएबल इज रिक्वायर्ड? वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, फोर वेरिएबल। तो अभी फर्स्ट टारगेट क्या है इस प्रोग्राम में? ये चार वेरिएबल मुझे ढूंढना है कि ये चार है कि नहीं इस प्रोग्राम में, ओके? तो आधा जो कोड लिखा हुआ, हाफ रिटन कोड, जस्ट फाइंड आउट। I get only two variable. One is width, other is height. And what is data type? Double, right? Two variable I have seen. How to take input? The first you have to create object for input in scanner class को use करके. Scanner class needs what? Import statement. You have to see this import statement, right? Main method is required because execution needs these, right? अब यहाँ पे देखो थोड़ा कंफ्यूजन ये होगा, ये स्ट्रिंग क्लास है और ये देखो स्मॉल में स्ट्रिंग्स क्या है, वेरिएबल, मतलब एरे नेम। तो क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ARGS। ARGS का तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, इसने क्या किया, स्ट्रिंग्स कर दिया। तो देयर विल बी नो कंफ्यूजन। स्ट्रिंग इज अ predefined class and this strings is a what, array name, means this is array of object, राइट? तो अभी दो वेरिएबल मुझे मिल गया, विड्थ एंड हाइट, राइट? तो इन दोनों के लिए इनपुट हो जाएगा और वो डबल टाइप का है। तो व्हाट टाइप ऑफ मेथड इज रिक्वायर्ड? नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट डबल, राइट?
अब सम यहाँ पे स्टोरी कुछ लिखा हुआ उसको पढ़ना है. The story is written. What? Note to the student. This is beginner level. Your goal to compute perimeter and area of rectangle. The width height have already been read for you above. मतलब बोला ये दोनों में पहले से इनपुट आ जाएगा. System can provide the input. Complete the two calculation below. कह रहा दो कैलकुलेशन आपको लिखना है नीचे. राइट ये सब ग्रीन है मतलब ये सब कमेंटेड कोड है. कमेंटेड कोड मीन्स व्हाट? कंपाइलर इग्नोर दिस कोड. इधर फॉर्मूला भी लिख दिया. इफ यू वांट टू कैलकुलेट पैरामीटर तो यू हैव टू राइट पैरामीटर एंड दिस काइंड ऑफ फॉर्मूला एंड यू हैव टू डिक्लेयर पैरामीटर. अब ऊपर दोनों डबल वेरिएबल है तो पैरामीटर शुड बी डबल. तो ऐसे करके लिखोगे डबल और एरिया इक्वल टू विथ इंटू हाइट एंड डबल पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू विथ प्लस हाइट. अब विथ के बदले और कुछ नहीं लिख सकते हो. सपोज मैंने इधर एरिया विथ के बदले सपोज डब्ल्यू डी लिख दिया. राइट डब्ल्यू डी और हाइट के लिए एच लिख दिया या डब्ल्यू एच लिख दिया. राइट इधर भी क्या किया डब्ल्यू एच. राइट कर दिया. लेकिन यहाँ जो वेरिएबल यूज किए थे ये क्या है? विथ और हाइट है. इसको चेंज नहीं कर सकते हो. एडिटिंग इज डिसेबल. तो तुमको यही रूल फॉलो करना पड़ेगा. अगर तुम अपना कुछ भी बनाओगे दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. अभी मैं रन करूंगा देखना क्या एरर आता है. कंपाइल एंड इट गिव्स सो मेनी एरर्स. जस्ट गो थ्रू द एरर. क्या है एरर? वेरिएबल एच नॉट फाउंड. वेरिएबल डब्ल्यू नॉट फाउंड. सब जगह आ गया. तो this kind of error can avoid. So just go through what kind of variable is already declared. The variable is declared with height, right? That kind of just use here. तो यहाँ की क्या यूज करना? Right. Rudra, just mark. Okay. स्टूडेंट नेम को मार्क करोगे जो बीच में ऐसा कर रहे हैं. राइट next is what? Just I have changed here. Then शुभ कुमार. हो जाएगा पता चल जाएगा. ओके तो कंपाइल एंड रन. राइट status is blank. Status is blank. That means what? Your program is successfully compiled. Right just check it. Yes my program compilation is successful and test case is passed. One by one means what? There is one public test case वो successfully पार हुआ. जब प्लेसमेंट का दोगे तो इधर लिखा आएगा पब्लिक टेस्ट केस 5 एंड स्लैश हाउ मेनी पब्लिक केसेस इज पास्ड. राइट देन सबमिट. राइट that is successfully submitted. So that is the technique. Go to the next. अब व्हाट इज प्रेजेंटेशन एरर? प्रेजेंटेशन एरर कैसे करेंगे? प्रेजेंटेशन एरर बेसिकली कमिंग फ्रॉम व्हाट? print statement. But print statement is here is disabled. In next program I will show. Just in this I think fourth number problem. In fourth number problem there is presentation error. The question is coming, write a Java program to print multiplication table. Multiplication table means what? Multiplication table of given number up to 4. What is meaning of this? Up to 4 means suppose I am giving 5. That means
I want to display table of 5 up to 4. Up to 4 means what? 5, 5, 5, 2, 10, 5, 3, 15, 5, 4, 20. Up to 4 means what? The counting start from this 1, 2, 3, and 4. How to solve this? The first you decide for int I equal to 1 semicolon I less than equal to 4 I plus plus. It means your loop goes to 4 times. Right? राइट, ये 4 बार चलेगा. उसके बाद प्रिंट मुझे ऐसा डालना है कि ऐसा प्रिंट होना चाहिए. राइट, हियर यू कैन यूज लाइक दिस system dot out dot print f, because here is written, just go through, here is written you have to use printf statement. Use system dot out dot printf with format string, this kind of thing. Right, first D used for printing 5, second D used for printing 1, and third D is used for what? Multiplication of these two. Right, how to do? तो printf, the format is given. पहले क्या यूज करना? परसेंटाइल डी स्पेस स्मॉल एक्स. राइट, क्योंकि उधर स्मॉल एक्स लिखा हुआ है. डी फिर स्पेस इक्वल टू फिर स्पेस परसेंटाइल डी. Right, and close it. Same thing is written here. Just see percentile d x percentile d space space, and lastly is written what? Slash n for new line. Slash n. Right. Then first d क्या आना चाहिए? The first d should be table. क्या input डाल रहे? You are giving the input is what? 5. To start with 5. Right. So just see here where to get the input part. So just see here, means whatever you are giving the input, that input store in number. So what to do here? Here use number. Number that is assigned to this d. Then next is what? 1 means I. So put here comma I. The third one is what? Number star I. That's it. I. Okay. This is the solution of next question. Clear? How to do this? इसको थोड़ा शॉर्ट में हम करेंगे. शॉर्ट मीन्स व्हाट? इसको थोड़ा एकदम शॉर्ट में करना है. हाउ टू डू दिस? तो पुट system dot out dot printf where inside loop. Right, okay, I have given this, and remove this I plus plus, convert into this one to I plus plus. Right, and put here semicolon. Right, easiest code. In 2 line I can convert it into 1 line. Just check it. Oh, copy paste is not allowed here. Right,
I have written here code, same code, right? I less than 4 system.out.println, and here, yes, space d. Okay, I have written this kind of code and with slash n as per his format, right? Same thing I have used. In first d contains the value of number, second d contains the value of I, and third d is what? Multiplication result. And loop end with this. Just compile it. Yes, here is error, presentation error, right? एक आया, देखो क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट था कि 5 क्रॉस 1 5 और नया लाइन आना चाहिए, 5 क्रॉस 2 नया लाइन आना चाहिए, 5 क्रॉस 3 नया लाइन आना चाहिए, 5 क्रॉस 4 नया लाइन नहीं आना चाहिए, उसके वजह से प्रेजेंटेशन एरर आया, राइट? हाउ कैन दिस सॉल्व? इसको सॉल्व कैसे करें? ऐसे सबमिट करोगे, यू कैन सबमिट इट, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको सॉल्व करो। हाउ टू सॉल्व? देखो अभी करते हैं सॉल्व, थोड़ा लॉजिक और लिखना पड़ेगा। हाउ टू सॉल्व? तो जस्ट रिमूव इट हियर, ये वाला पोर्शन को हटाएंगे, नॉट अलाउ, ओके, I plus plus, and I am typing here if I not equal to 4, जब तक not equal to 4 रह रहा है, राइट? तब तक क्या करेंगे? system dot out dot print percentile d percentile d percentile d percentile d space small x space space equal to space, राइट? जब तक नॉट है तो n के साथ प्रिंट करेंगे, राइट? और यहाँ आना चाहिए नंबर I एंड नंबर इनटू I, राइट? और एल्स में क्या होना चाहिए? अगर I 4 हो जा रहा है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट क्या करना है? परसेंटाइल डी स्पेस एक्स परसेंटाइल डी स्पेस इक्वल टू स्पेस परसेंटाइल डी, इधर स्लैश एन नहीं यूज करना, राइट? नंबर कॉमा आई कॉमा नंबर इनटू आई, हो गया। अभी प्रेजेंटेशन एरर नहीं आएगा क्योंकि मैंने क्या कर दिया, आई जब 1 है नॉट 4 है तो 1 मतलब 5 इंटू 1 और नया लाइन के साथ आया, 2 में भी नया लाइन के साथ आया, 3 में आया, 4 नॉट इक्वल टू 4, ये फॉल्स हो गया तो एल्स को जाएगा। जस्ट कंपाइल इट। एरर कहाँ से? फॉर्मल आर्गुमेंट लेंथ इज डिफर, error is coming, y 2d int string int something is missing, print number by सर एल्स का इंडेंटेशन गलत no है। no 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 no, I have missed the f, print f, right? I have written what? Print, that's why this error is coming, okay?
There is no presentation error. Just check it. Exactly output. Same, same. Last one, same. No error, right? Clear? Indentation is automatically there. अपने आप बन जा रहा है. If का ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है, और का ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है, right? That is automatically right and submitted, right? So these are the techniques to you can solve your problem, right? And that is successfully submitted, right? तो प्रेजेंटेशन एरर मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा आउटपुट आ रहा है वो परफेक्ट आ रहा है कि नहीं, राइट, उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं. तो कभी कभी प्रेजेंटेशन एरर को तुम इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इसको जरूर पढ़ना. बिफोर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम यू मस्ट रीड इट, दीज थिंग, मैच द आउटपुट एग्जैक्टली इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यू लाइन. यहाँ देखो क्लियर लिखा हुआ, राइट? तो पूरा मैच करना. वेरिएबल भी इधर स्पेसिफाई किया, यूज अ फॉर लूप दैट रन आई इक्वल टू 1 अप टू 4 ऑन ईच पास, कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ दिस, प्रिंट लाइकली एग्जैक्टली द फॉर्मेट, राइट? और स्पेस को मेंटेन करना है. तो यहाँ देखो 5 स्पेस x स्पेस 1 स्पेस इक्वल टू स्पेस 5. अगर ये स्पेस को नहीं फॉलो करोगे, जस्ट मैं देखो अभी ये स्पेस को हटा देता हूँ, राइट? हटा दिया एक स्पेस को, देखना क्या होगा. जस्ट कंपाइल इट. देखो यहाँ क्या था और मेरा आउटपुट कैसा आ गया, और आंसर क्या आ गया, रॉन्ग. तो यू हैव टू लर्न दिस काइंड ऑफ थिंग बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड इन प्लेसमेंट एग्जाम्स. वहाँ तुम्हारा बहुत सारा टेस्ट केस ही नहीं पास करेगा, राइट? तो हाउ टू करेक्ट इट. देखो यहाँ बोल रहा है कंपाइलेशन इज सक्सेसफुल बट योर टेस्ट केस इज 0, क्योंकि वहाँ जो मार्क मिलता है यही टेस्ट केस के ऊपर मिलता है मार्क, राइट? तो मेंटेन, वो पूरा को मेंटेन करना है और सीखना है तुमको. तो राइट हियर व्हाट, व्हाई दिस एरर इज कमिंग, बिकॉज ऑफ दिस. देन अगेन कंपाइल इट. just compile, then successful submit, right? So this is the today everyone complete all the assignments. सारे को complete करना है. लास्ट वाला भी देख ही लेते हैं and then stop कर लेंगे. The next question is what? Complete the code fragment that reads two integer input from keyboard and compute the question quotient and remainder, right? तो दो इनपुट हमको लेना है, राइट? और दो इनपुट को, इनपुट के थ्रू से क्वोशंट और रिमाइंडर को निकालना है, राइट? यू हैव टू जस्ट रिकॉल योर ऑपरेटर. ऑपरेटर में मैं बताया था हाउ टू गेट द क्वोशंट एंड हाउ टू गेट द रिमाइंडर. यू हैव टू ऑपरेटर, modulo and division operator, right? If you have number like 6, first number is 6 and other number is suppose y, that is what, suppose this one is 16 and this one is suppose 6. I want to get quotient q. How to get q? X divided by y, right? I want to remainder. How to get remainder? R equal to x modulo y. This is our problem statement, right? यही बोल रहा करने के लिए. तो यहाँ लिखा हुआ स्टूडेंट को रीड करने के लिए. Note, this is beginner level task. Your goal is compute the quotient and remainder using this. The two integer x y have already been read the above. कह रहा x y में पहले से डाटा है. The quotient is whole number, result division. Quotient हमेशा whole number होता है, right? और उसका result क्या होगा, ऐसे करके हम get कर सकते हैं. In Java
डिवाइडिंग टू इंट्स गिव इंटीजर पोर्शन। तो यहाँ बता दिया कि जावा में अगर दो इंटीजर को डिवाइड करोगे तो उसका आंसर इंटीजर आएगा, राइट। तो ऊपर चलते हैं, यहाँ पे तो दो इंटीजर है ना मेरा x और y, तो रिजल्ट को रखने के लिए भी हमको इंटीजर चाहिए, वी नीड इंटीजर, राइट। तो कैसे निकालेंगे, रिमाइंडर what is left over after the division, which is modulo operator to get the remainder using this x modulo y, right. The same thing come here. So this is area for what, getting the answer। यहाँ पे तुमको करना है, राइट यहाँ पे लॉजिक लिखना। तो देखो यहाँ पे दो वेरिएबल लिखा है जो रिजल्ट को प्रिंट कर रहा है, you want to use that variable, right। The first variable is what, and what is data type? So data type mention int because x and y, the data type of x and y is int, तो आंसर भी वही होगा, x divided by y, that is over। Next is what, remainder is a name of variable, so write here what, int remainder equal to x modulo y, right, just write प्रेजेंटेशन एरर। वाई प्रेजेंटेशन एरर, यहाँ देखो स्लैश एन मेरे में आ रहा है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ये जो है प्रिंट एलन लिखा हुआ उसके वजह से एरर आ रहा है। इस प्रिंट एलन यू कांट चेंज इट, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो, तो एज इट इज रहने दो, राइट, एंड सबमिट इट। Yes, pass, and private test case is also passed, right। So this is the technique to you can apply, right। ऐसे करके तुम लोग को सॉल्व करना है। टुडे इज द लास्ट डे फॉर सबमिटिंग दीज टू प्रोग्रामिंग असाइनमेंट, वीक 1 वीक 2 दोनों तुमको आज कंप्लीट करना है, राइट। एनी क्वेश्चंस from student side? If you have any question, just ask it। No question? No doubt, sir. Okay. Okay. Thank you and good night. Everyone complete before 11 p.m. today, right? Next session we will resume in next week. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.